So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Sunday at 3 p.m. we are having weekly current affairs, and in today's class we are going to discuss the fourth week for the month of August 2025. So let us start with today's class. Okay, so am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Yes, good afternoon, Adrija. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, you're audible. Okay, if you're interested to watch the previous videos, for example, if you are starting your preparation or revising it today, then first please subscribe to the channel, go to the playlist, scroll down, and here you will find weekly current affairs. इसमें view full playlist पे click कीजिए, and you will get all the previous videos since January. ठीक है? All the important weekly current affairs. So let us begin with the first question. So the first question says, where will be the 21st edition of India-US Joint Military Exercise Youth Abhyas be held? Rajasthan, Himachal Pradesh, Alaska, Mississippi. So देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो आप लोग सोचे होंगे, you might be thinking that currently we are having some friction with USA. So there might not be any joint military exercise. ऐसे पूछ सकते हैं कि युद्ध अभ्यास recently in news is a joint military exercise of which two countries? And they will give option India, US, India, Russia, India, France, India, Germany, something like that. So you might not be able to think why we are having currently, but yes, you should know that yes, even if we have frictions currently, there are some issues with USA like tariff, H1B visa, etc. Still, actually, we are doing the joint military exercise in Alaska. Yes, Aryan and Adijan, you both are right. Please tell me, Alaska was also in the news on 15th August. Why? So here the answer is C. So basically, Fort Wainwright एक जगह है Alaska में where Indian military and US military is doing UWS exercise. Okay. So here is India. This is US mainland. This is Alaska. Yes, Trump didn't meet, right? Russia, US. Very good. So Alaska में एक जगह है ना अंकोराज, यहाँ हुआ था ना मीटिंग. So Mr. Putin and Donald Trump met. Okay, that is what you should be knowing about. Let's move on to the next one. What is the name of US missile defense system aimed at intercepting missiles in space and during the boost phase? Iron Dome, Star Shield, Golden Dome, Patriot X. So they have actually planned. This is a planned one. When Donald Trump came to power, he actually signed this the agreement, the document to go ahead this air defense system. What is that? Iron Dome Israel का है ना, Rafael Advanced Defense System manufactures this. So it's not A. The answer is option C. Yes, Adija, right? You are right. C is the right answer to this question. ठीक है, $175 billion missile defense system. Okay. So 27th January 2025, Donald Trump signed this. ठीक है, Golden Dome पढ़िएगा. Just know it. So they are making a multi-layered defense system. Let's move on to the next one. Where are the first ever humanoid robot games being held? Your options are Tokyo, Shanghai, Beijing, Seoul. The right answer is option C. Beijing is the right answer to this question. Yes, Aryan, Adrija, you are right. Anna. Humanoid robot games with 500 androids participating. Beijing's world's humanoid robot game shows a human touch is still needed. है ना? तो ये है, आपने देखा होगा बॉक्सिंग के लिए इवन बीजिंग चाइना हैज डन व्हाट वी कॉल इट अ सेमी मैराथन, है ना, वेयर एक्चुअली
Robots participated. They did a robot football also. Many things they are doing. Okay, so C is the right answer. China is very much ahead in these things. Let's move on to the next one. Who has been recently appointed as the governor of Nagaland in addition to the current role recently? And why? Please tell me the reason also. Again, the same date, 15th August 2025. The governor of Nagaland, Mr. La Ganesan, died. So after his death, actually, the governor of Manipur is Mr. Ajay Kumar Bhalla, option B. And he has been given additional charge, right? Aryan and Adrija, you both right. B is the right answer. Very good. ठीक है, so इतना पता होना चाहिए ना. And Mr. Ajay Kumar Bhalla has earlier served as Union Home Secretary also. Let's move on to the next one. The Deep Ocean Mission is primarily led by which ministry? And what is the name of the mission under this in Hindi? ये PYQ है, previous year question है. Ministry of Earth Sciences, option B. Mission Samudrayan. So B is the right answer to this question. Mission Samudrayan, Deep Ocean Mission. And the thing that will be sent inside the water will be Matsya 6000. ये भेजा जाएगा पानी के अंदर. ठीक है. So B is the right answer to this question. So Deep Ocean Mission is spearheaded by Ministry of Earth Sciences. And center of the Indian Ocean, India has got the permission to extract polymetallic nodules. So which organization has given the permission? Anyone? International Seabed Authority. नाम सुना है? I'm sure you must have heard this, right? So that is what you should know. Let's move on. Which of the following Indian ports is the first to implement anti-drone surveillance and neutralization system? The right answer is Kandla Port. B is the right answer. Okay. Because it is near the Pakistan border. So anti-drone to shut down any enemy's drone. Okay. So B is the right answer to this question. Okay. Let's move on to the next one. What is the main aim of Jan Vishwas Amendment of Provision Bill 2025? Yes, Krishi Sachdeva, you're right. Decriminalize minor business offenses so as to ensure ease of doing business. Promote ease of doing business, है ना? हाँ, yes, Krishi Sachdeva, आशीर्वाद. You're all right. Decriminalize करने के लिए ताकि ऐसा नहीं होगी छोटे-छोटे mistakes पर criminal offense register हो जाए. The next one is, where was India's first removable solar panel system that between railway tracks commissioned recently? So the right answer is option A. Varanasi is the right answer to this question. Okay. So Banaras locomotive works. देखो इसके बीच में दोनों, between the two tracks, solar panel is being installed. So A is the right answer to this question. The next is, what is the purpose of Mission Sudarshan Chakra?
The right answer is yes. So basically, even option A भी कुछ हद तक सही हो सकता है आंसर, but the option C थोड़ा सा weak है इसमें, like but the answer is option C. मतलब air defense system है, तो missile defense system भी ठीक होगा. A can also be correct. So this is a missile defense system to protect our vital installations and civilian strategic है ना. So that is what this is being planned. है ना, mission Sudarshan Chakra. Yes, Ashim Adija, you are right. है ना. And the plan is to achieve by 2035. The next is which are the following Indian groups won 2025 Equator Prize? Very, very, very important. Of UNDP, United Nation Development Program के द्वारा दिया जाता है. Star Market, this is very, very important. The right answer is option B, Bibi Fatima Suha Sahai Sangh. Yes, Ashim, Krishi Sachdeva, Adrija, you are right. B is the right answer, है ना. ठीक है. They promoted millet farming and solar powered processing. They are self-help group in Karnataka, 10th village of Karnataka. Yes, they promoted millets. And India is the largest producer of millet. I'm sure you must be aware, right? Which of the following Indian state is set to become country's first digitally literate state? बताइए. Yes, literacy में ऐसे भी केरला वगैरह आगे होता है. So option A. Yes, Ashim and Krishi Sachdeva. Adija, you are right. DG Keralam project है ना. That is what you should be knowing it. Let's move on to the next one. Which of the following universities developed a prototype for a universal antiviral, a treatment used by temporary shield against a wide range of virus from influenza to COVID-19? तो एक ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन ये जो भी कहो बनाया है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने जो बहुत सारे वायरस को फाइट कर सकता है, इन्फ्लुएंजा से लेके कोविड-19 तक. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ठीक है. Develops world's first prototype against many viruses, including influenza and COVID-19. Yes, D is the right answer. The next is who has recently been appointed as the first ever Hindu chaplain in UK's Royal Navy. Royal Navy मतलब ब्रिटिश नेवी. उनकी चैपलिन जो होता है मेंबर ऑफ क्लर्जी होता है एक तरह से, है ना. मतलब नेवी में भी क्लर्जी होते हैं ना, मतलब रिलीजियस प्रीस्ट, रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह करने के लिए. यस, मिस्टर भानु अत्री. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. Will be offering spiritual support to fellow Navy officers based on the tenets of Hinduism. Okay. The next is which of the following countries introduced AI child Latifa? AI मतलब वही artificial intelligence. Nowadays everything is all about AI. इतना आगे निकल गया artificial intelligence. The right answer is option C, UAE. Yes, Krishi Sachdeva, Adrija, you are right, है ना. ठीक है. The next is which of the following Indian companies became the first energy firm to join RE100, Renewable Energy 100 Initiative? RE100 Initiative. Suzlon Energy. Yes, Krishi Sachdeva, you are right. Huh? Suzlon Group pledges 100% renewable energy usage by 2030. कि इनके प्लांट में पूरा कंप्लीट 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगा. ये RE100 इनिशिएटिव है क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा. ठीक है. टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज. राइट. हाँ, राइट. Krishi Sachdeva. हाँ. द नेक्स्ट इज अच्छा एक चीज बताओ, इंडिया का नेट जीरो एमिशन टारगेट क्या है? India's net zero emission target. What is that? Anyone? 2070. Very good. Very good. Krishi Sachdeva.
ग्रेट, है ना. वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो. कॉप 26 में पंचमृत 5 goals मोदी जी सेट, उसमें वन ऑफ द गोल्स वाज दिस, है ना. यस अदीजा, यू आर आल्सो राइट. लेट्स मूव ऑन. द हीलियम रिकवरी प्लांट will be located in which of the following states? Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra. नहीं, एनडीसी पंचमेत अलग है. पंचमेत कॉप 26 के रिजल्ट में है. एनडीसी तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कॉप 21 के रिजल्ट में था. ठीक है, मतलब एक्चुअली सिमिलर है कुछ कुछ मामले में. यस यू आर राइट, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है. ठीक है, the right answer is option B. Tamil Nadu is the right answer to this question. है ना. So ONGC and EIL, Engineers India Limited. So B is the right answer. Yes, you can see. The next one is which of the following two companies to establish first helium recovery plant? अभी मैंने बताया. So इस तमिलनाडु में सेटअप होगा. ठीक है, और जो दो कंपनीज हैं उनका नाम मैंने अभी बताया. नहीं, पंचमृत वाज गिवन बाय कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था. ठीक है, और आईएनडीसी जो है कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के रिजल्ट है. वो दैट डिफरेंट. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओएनजीसी एंड ईआईएल. यस, बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. Let's move on. Which of the following countries plan to build a nuclear power plant on the moon by 2035? लाइव भी उसी जमाने में दिया गया था, कॉप 26 के आसपास. हमको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, बट कॉप 26 में फेमस हुआ था लाइव. हमको जहां तक याद आ रहा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट. ठीक है. Which of the following countries plan to build nuclear power plant on the moon? देखो, अब अर्थ पे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंसानों ने बना ही दिया, मून पे ही बनाएंगे. तो सी इज द राइट आंसर. चाइना विल बी डूइंग इट. ठीक है, लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट मे बिल्ड, अभी तो मे में है, हालांकि श्योर नहीं है, ऑन मून टू पावर द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर. और अलॉन्ग विथ रशिया, मतलब सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना एंड रशिया बोथ. तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए और सी दोनों हो जाएगा उस हिसाब से. ठीक है, बोथ विल बी द राइट आंसर. Let's move on to the next one. From where was the Agni 5 missile recently tested? आपको पता है, ये तो आपको पता होना चाहिए. अग्नि 5 है ना, तो 5000 किलोमीटर रफली होता है इसका रेंज, बट कई बार ज्यादा भी हो जाता है, 6-7 हजार भी चलाता है. So अग्नि 5 क्या है, कहां से टेस्ट किया गया? हाँ, ऑप्शन बी चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर, बालासोर, ओडिशा. B is the right answer. Yes, Adrija, Rishi, Sachdeva, Aryan, you all are right. अच्छा, पोखरान किस लिए फेमस है? Why is पोखरान फेमस? हाँ, ये IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, है ना. पोखरान 1 और पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट कब कब हुआ था? And what is the name of those operations? Smiling Buddha and Shakti. Very good. 1974 पोखरान 1, 1998 पोखरान 2. या इंदिरा गांधी जी के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में. ये स्माइलिंग बुद्धा हो गया, ये ऑपरेशन शक्ति हो गया. And India successfully test fires Agni 5 ballistic missile, है ना. MIRV है ना, मैंने बताया है MIRV क्या होता है. मल्टीपल, ये जो है इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल मिसाइल्स निकल के आएंगे वापस अटैक होते वक्त, है ना. So it's an example of MIRV technology, multiple independently reusable launch vehicle, इस तरह करके नाम होता है. ठीक है. The next is which of the following ITs has launched India's first AILET program for cyber security against generative AI threats? Generative AI किसको कहते हैं? जैसे चैट जीपीटी हो गया, सबसे फेमस है, डीप सीक, और भी बहुत सारा आजकल इतना कुछ आ गया, जेमिनी, ग्रोक, so many generative AI is there. इसी को LLM भी लिखते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. कौन से आईटी ने स्टार्ट किया है? आईटी रुड़की. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, द राइट आंसर इज सी. लेट्स मूव ऑन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द फर्स्ट टू कट प्राइसेस ऑफ कैंसर एंड रेयर डिजीज ड्रग्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स?
हाँ, द राइट आंसर इज डी, गोवा। यस कृषि सचदेवा, यू आर राइट। 80% तक रिड्यूस कर दिया। ऑफ कोर्स कैंसर की दवा सस्ती होनी चाहिए, इट शुड बी चीपर सो एज टू एंश्योर दैट पीपल शुड बी गेटिंग एट अ चीपर कॉस्ट। The next is who among the following recently became the first Indian to perform a Hindi comedy show at Madison Square in America? ये भी बहुत फेमस आदमी है ना? Yes, Mr. Zakir Khan B is the right answer. Yes, Ashim Krishi Sachdeva, you all are right, है ना? Aryan, you all are right. Dhruv, you are also right. Let's move on. Where is ISRO's second spaceport being developed in India? Being developed in development के process में ही। हाँ, सी इज द राइट आंसर। कहाँ? तमिलनाडु में। देखो अगर आप इसको तिरुवनंतपुरम में एक थुम्बा है, उसको हालांकि फुल फ्लेज नहीं माना था, लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट मानोगे तो ये वाला फिर सेकंड हो गया और ये वाला थर्ड हो गया, लेकिन इसको फर्स्ट मतलब इतना फुल फ्लेज नहीं माना जाता है तिरुवनंतपुरम को। सो फुल फ्लेज श्रीहरिकोटा को माना था आंध्र प्रदेश में, एंड सेकंड फेमस इज कुलासिरिकरीपट्टनम व्हिच इज बीइंग मेड इन तमिलनाडु, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। यस, टूटुकरिन, राइट। सो इसीलिए आई मीन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसे पूछ सकते हैं तमिलनाडु में, ईस्ट कोस्ट में, है ना? फर्स्ट ये तो थ्योम्बा, लेकिन ये बहुत फुल फ्लेश नहीं माना था, तो मेन इसी को माना था, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद कोलासिकरीपट्टनम। यहाँ पे एसडीएससी है फुल फ्लेज वाला, एक केरला में थुम्बा, बट दैट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, और तो इसीलिए इसको फर्स्ट माना जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और सेकंड यहाँ पे केरीपट्टनम। और मैंने क्या बताया था, नियर टू इक्वेटर रहे, टू कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, नियर टू इक्वेटर और ईस्ट कोस्ट, ये दोनों पॉजिटिव अच्छी चीज होती है, बेनिफिशियल होता है। तो ये तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ईस्ट कोस्ट में, लेकिन ये देखो और नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर यही पे है ना, इसकी जस्ट नीचे जाओगे तो इक्वेटर मिलेगा, राइट, है ना? तो ये मेरे ख्याल से हार्डली 8-9 डिग्री के आसपास होगा, 8 या 9-10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास होगा। सो इट्स वेरी गुड दैट वी हैव चूजन इवन नियर टू इक्वेटर। The right answer is which of the following Indian states is set to build world's first functional hyperloop system? हाइपरलूप पता होगा आपको, वैक्यूम के अंदर एक तरह से ट्रेन जाती है, वैक्यूम का ट्यूब होता है, उसके अंदर ट्रेन टाइप की चीज जो भी कह लो आप उसको, वो जाती है ना। The right answer is option B, Maharashtra. Yes, Aryan Krishi Sachdeva, you are right. JNPT को वाधावन पोर्ट विल बी द 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो इससे कनेक्ट करेगी, ये है मुंबई, ये वाधावन यहाँ से कनेक्ट करेगी, ये मुंबई है। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में है, ये वाधावन से, है ना? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अंदर जाती है, हाँ काफी फास्ट होता है, ट्रेन से तो डबल ट्रिपल स्पीड होगी, और वो ट्यूब में चलती है, ट्रैवल करती है, और इसमें वैक्यूम होता है अंदर, इसलिए देयर इज नो फ्रिक्शन। आपको पता होगा वैक्यूम नहीं होता है तो वैक्यूम होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, it will run very fast. The next is where is India's rank in World Competitiveness Ranking 2025? You have, I think, gone down 2 rank as far as I could remember. Actually, it's 41. Earlier, it was 39. IMD निकालती है, International Institute for Management Development. Business school है, with MBA college समझ लो, स्विट्जरलैंड। B is the right answer. ठीक है, रैंक 1 स्विट्जरलैंड का। Which planet's new moon is named this by NASA? एक नया मून खोजा गया। The right answer is Uranus. देखो लास्ट में U1 है ना, तो ऐसे याद रख लेना, यूरेनस is the right answer. और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा ने भेजा 1-2-3 साल पहले, उसी ने डिस्कवर किया। The next one is where is Khelo India Water Sports Festival being held? The right answer is option B, डल लेक श्रीनगर। ठीक है, पता होना चाहिए, डल लेक श्रीनगर में हो रहा है, 21 से 23 अगस्त को होगा,
है ना? यस, ध्रुव कृषि सचदेवा। हाँ, यू आर राइट। नेक्स्ट है, व्हाट हिस्टोरिक माइल हैज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अचीव? हाँ, 100 गोल्स इन 4 नेशंस, चार जगह से खेले हैं और चारों जगह 100 गोल मिला है। 100 गोल से ज्यादा है ना। Let's move on to the next one, who has recently been appointed as the Deputy National Security Advisor. देखो ऑप्शन सी तो पता होगा, he's a National Security Advisor. So he was earlier the Director General of CRPF, Mr. Anish Dayal Singh. ठीक है। ओके, ऑप्शन ए होगा, डेप्यूटी एन से पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। द नेक्स्ट इज, थ्रू विच बॉर्डर पास इन इंडिया प्लानिंग टू रेज्यूम ट्रेड विद चाइना इन हिमाचल प्रदेश? मतलब इस पास से, पास समझते हो ना? देखो, पहाड़ के बीच में वैली होती, एक माउंटेन दूसरा माउंटेन, बीच में वैली होती है ना? ये पास हो गया, यहां से लोग रास्ता जाता है, अरे है ना? नॉट लीपू लेक, ना ना ना, शिपकिला, राइट आशिम, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर। शिपकिला पास से, ठीक है। लीपू लेक पास से तो मानसरोवर यात्रा होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये वाला लीपू लेक है, यहाँ से जैसे दिल्ली से आपको जाना है मानसरोवर, यहाँ पे मानसरोवर है, तो ऐसे लीपू लेक पास होके जाते हैं, ठीक है, ये लीपू लेक है। यहाँ पे नेपाल क्लेम करते हैं कि मेरा हिस्सा है एक्सेट्रा, हाँ, काला पानी ले पाए डिस्प्यूट। लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं, जो ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पर शिपकिला पास है, एंड कौन सी रिवर पास करती है यहाँ से, कोई बता सकता है? हिमाचल प्रदेश। और देखो यहाँ लिखा हुआ भी था ना, हिमाचल प्रदेश, और लीपू लेक तो उत्तराखंड में हो गया ना, यूके। तो यहाँ पे से कौन सी रिवर गुजरती है? एनीवन, व्हिच रिवर पासेस थ्रू इट? इट्स अ होमवर्क। यहाँ से स्टार्ट होती है समवेयर और ऐसे जाती है, शिपकिला पास से क्रॉस करती है। नॉट रावी, ना, रावी तो इंडिया में शुरू होती है ना। ब्रह्मपुत्र, अरे ब्रह्मपुत्र इज हियर, दिस वन इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और एक और पास है, ठीक है, मानसरोवर। मानसरोवर या तो यहां से भी होती है, सिक्किम के पास यहाँ पे नाथुला पास है, बहुत फेमस है, वेरी फेमस, नाथुला पास। ला का मतलब ऐसे पास होता है, बट हम लोग लिख देते हैं ऐसे नाथुल, ठीक है। इंडस भी नहीं जाती ना, ना ना, इंडस ऐसे जाती, ये है इंडस, मतलब थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर चला गया इंडस, ऐसे इंडस जाती है ना। बियास, वो भी नहीं जा, येट टू गेट द आंसर, सतलज, सतलज रिवर जाती है। ब्यास भी इंडिया से शुरू होती है, सतलज आती है पीछे से, तिब्बत से होके, ठीक है, सही पता होना चाहिए। सब सारी नदियां हो गई, बट सही आंसर नहीं मिला था, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो ऐसे बताते, देखो ये इंडस है, आई इंडस, झेलम, यहां से चेनाब ऐसे निकली, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसे पीछे से आती, मैंने रफ बता दिया, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। Let's move on, खैर, which of the following developed integrated air defense weapon system IADWS? वही सुदर्शन चक्र का मोस्ट लाइकली ये सब पार्ट होगा, वशोराद, IADWS, ये सब ऑफ कोर्स कॉमन से। देखो इसरो जो है, तो कैसे सोचना है, इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो ये नहीं होगा आंसर। बार्ग भाभा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होगा, तो ये भी नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हवाई जहाज बनाएंगे, तेजस वगैरह, ये पूछा हुआ पीवाईक्यू में, है ना, तो डीआरडीओ होगा, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस सब चीज पढ़ा हुआ नहीं होता, बट कॉमन सेंस से आपको एलिमिनेट करना होता है, यू शुड लर्न टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, राइट, है ना। तो ऐसे आपको पहुंचना है। देखो कभी कभी आप इस तरह कॉमन सेंस लगाओगे, 10-20% केस में गलत भी हो सकता है, बट 80-90% केस में तो सही होगा, ठीक है। वेयर इज द CISF फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट बीइंग ट्रेन्ड? The right answer is option B, Barwaha, Madhya Pradesh. Yes, Krishi Sachdeva, right, B is the right answer. Yes, Adrija, Krishi Sachdeva, you are right.
The next is which of the following country has recently become a member of International Big Cat Alliance? से PYQ आया हुआ है लास्ट ईयर है ना, इसमें 7 बिग कैट्स होते हैं ना, टाइगर नहीं बल्कि और भी जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, चीता और भी होते हैं ना, 7 टोटल है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा, अभी रिसेंटली नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रोजेक्ट टाइगर जब 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ था तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, अप्रैल 1973 से 50 साल हुआ था, तो अप्रैल 2023 में स्टार्ट किया गया था ये। लेट्स मूव ऑन, है ना, ये सब मेंबर्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक दो बार रीड कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब्स रिटेन दुरंत कप टाइटल? अच्छा, मैंने कई एग्जाम में देखा ये पूछते हुए कि दुरंत कप कहाँ के कौन से टूर्नामेंट में होता है, या दुरंत कप जो है वो मतलब कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फुटबॉल क्लब। राइट, कृषि सचदेवा, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर है ना। Let's move on. What is the name of India's planned space station? पहले तो 2035 न्यूज में आ रहा था, बट अब क्वेश्चन न्यूज में है कि 2028 तक we'll come up with that. C is the right answer. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, तो लॉन्च इट्स होम बिल्ट है ना। अच्छा, फर्स्ट मॉड्यूल, हाँ फर्स्ट मॉड्यूल जो है ना, पहला हिस्सा जो भेज दिया जाएगा वो 2028 में भेजा जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ। और आई थिंक 2035 जो मैंने रीड किया होगा वो पूरा कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट का होगा। दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। सो सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक वी आर डन विद दिस। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ, चाइना का स्पेस स्टेशन है, आई थिंक दे हैव मेड 60-70% तक बना भी दिया। चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? एनीवन? इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ स्पेस स्टेशन, राइट। हाँ, तियांगोंग करके, तियांगोंग, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, तियांगोंग, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो उनको 5 भेजना था, उसमें शायद 3 के आसपास भेज दिया है, 3 या 4 उन लोगों ने भेज दिया। सो आई थिंक मोर देन हाफ दे आर डन, ठीक है। और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड 5 कंट्रीज हैव मेड इट, उसका नाम बताना है, बताओ तो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन कौन से कंट्रीज ने मिलकर बनाया है? एनीवन? नासा यूएसए है ना, कनाडा स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस ऑफ रशिया और जाक्सा ऑफ जापान, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, press the like button, share this video. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.